the preventive measures that we, that are being mentioned and in the CrPC. And within this, I have talked about certain chapters. Okay, chapter 10 is very important, and within the chapter 10, I'll say there is a section related to public nuisances, and section, especially section 133. It's very important, and it's very important for you to understand it. We'll be also coming to the chapter related to unlawful assemblies and other, but the chapter 10 part B. Okay, so section 133 talks about conditional order for removal of nuisances. Okay, so it says it's a conditional order. Okay, so that's very important. It's not just an order, but it's a conditional order. And during the discussion, we'll also deliberate on what exactly it means by saying it's a conditional order. Okay, conditional order है, ये order नहीं है. ये थोड़ा words पे थोड़ा ध्यान देना है. Whenever a district magistrate or SDM or any other executive magistrate, especially empowered in this behalf by the state government on receiving the report of a police, so he can get the information by the police or other information, and on taking such evidences, if any he thinks fit, considers. So that's very important कि उसका source of information क्या हो सकता है. Source of information may be from the police and it may be from the individuals as well. Okay, and he talks about evidences. When we talk about evidences, it's not like a judicial magistrate court where you have to tender the evidence a particular form, then he will see whether it's a relevant or admissible or not. Those things will not work here. So it's more like a, for example, there is a dangerous structure. Okay, the photographs of the dangerous structure, or if there is an encroachment on a public land, photograph of that land, those things of evidence which are not weighed, not, it's not like a court of law. So वो information उनको आती है, और उसके बाद में इन्होंने category कर दी है. So category A talks about unlawful obstruction. Nuisance should be removed from any public place or from any river or channel which is or may be lawfully used by the public. See, this is very important that they have been using the word public. So private land में अगर कोई encroachment होती है ना, so you cannot approach to the magistrate, executive magistrate. Got my point? मान लीजिए आपकी कोई जमीन है और जमीन में किसी ने encroachment कर दी, ठीक है, तो क्या आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जाएंगे? नहीं जाएंगे. पब्लिक लैंड होगा, लेकिन पब्लिक प्लेइंग पार्क हो गया या कोई पब्लिक प्लेस है, उस पर इंक्रोचमेंट हो सकती है, तो देन यू कैन ऑलवेज मूव टू द magistrate, executive magistrate under section 133. The conduct of any trade or occupation or keeping of any goods or merchandise injurious to the health of the physical comfort of the community, and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated. So यहाँ पे दो वर्ड यूज किया, वो भी मैं बोलूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. One is the prohibition and second talks about regulation. So depending on the the nature or the gravity of situation, magistrate can give an order for prohibition also, regulation also, and those are quite different. Okay. Then construction of any building or disposal of any substance as likely to the occasion conflagration or explosion should be prevented or stopped. That any building, tent or structure, any tree in such condition which is likely to fall and thereby causing injury to the person living or carrying on the business in the neighborhood or passing by. मान लीजिए आपकी घर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बगल में रास्ते में पेड़ है और पेड़ गिरने की कंडीशन में हो गया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है. Then also you can approach to the executive magistrate. So these are some of the, I'll say A, B, C, D, E, F. Okay. So these are some of the conditions that they have mentioned. In those cases, you can approach to the executive magistrate under section 133 for the remedy. And then, sir, I have one question, sir, here. बोलो. सर मजिस्ट्रेट इसमें क्या सर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है या फिर कंप्लेंट के बाद में ही एक्ट करेगा?
नहीं ले सकता है, अपने आप ही कर सकता है, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन यूज किया है, वर्ड नॉलेज तो यूज नहीं किया है। जनरली सुओ मोटो तभी होता है जब नॉलेज जैसा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। बट ऐसा कोई पावर रोकता नहीं है, तो वो एक्ट कर सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर उसको लगता है कि भाई इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि भाई ये जो है बिल्डिंग गिरने वाली है, या इस पे रोड पे किसी ने इंक्रोच कर रखा है न्यूज़पेपर में से, सो मजिस्ट्रेट कैन ऑलवेज टेक एन एक्शन, दे हैव यूज्ड वर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन एनीवन। सर जैसे कि सर सिटीज में से, यहाँ जैसे मैं लखनऊ के एक दो एग्जांपल देता हूँ सर, कि यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में सर ये आरा मशीन्स होती है सर, मतलब जो प्लाई बोर्ड वगैरह बनाते हैं वो सर कुछ हाँ केमिकल हाँ। यूज करते हैं। तो सर इस पर सर मतलब ये इन्होंने मतलब अगर इनके पास में सर सुओ मोटो कॉग्निजेंस पे ये कर सकते हैं, तो सर इस तरीके की कंप्लेंट्स ये एंटरटेन या मतलब खुद से ये सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते सर इस पे? तो नहीं, स्टोव मोटो इसलिए नहीं लेते होंगे, बहुत एक तो बहुत से रीजन है, बिकॉज एक करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, अगर 133 में जाना है, बिकॉज सी द रेमेडीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट सेक्शन। फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन पे एक जजमेंट आया है कि बिकॉज वाटर पोल्यूशन, इट्स अ पर्टिकुलर फैक्ट्री इज रनिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया and it is the source of a water pollution. Now you have a provision in Water Act, okay, where or Pollution Control Act. So in those sections you can approach rather than approaching in 133. Now in your case अगर आरा मशीन है तो आरा मशीन से क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? एक तो तुमने बोला केमिकल का, सेकंड क्या ऐसी साउंड जनरेट होती है जिसके कारण उस एरिया में डिस्टर्बेंस हो रहा है, then still it can be so. See, larger public has to be affected. पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि जो भी इफेक्ट हो रहा है लार्जर पब्लिक एट अ लार्ज हो, मतलब ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो 133 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो सो मोटो नहीं ले रहा है, सो यू कैन ऑलवेज मेक अ कंप्लेन कि भाई ये चीजें हो रही है, इसके कारण हम हो रहे हैं और आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप जी सर। अफेक्ट हो रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके जैसे एग्जाम्पल सारे जो दिए गए हैं, ठीक है, तो वहां पे इसको पावर भी दिया गया कि भाई ये रिमूव, तो कंडीशनल है ऑर्डर। सो क्या होगा कि ऐसे डायरेक्ट रिमूवल का आदेश नहीं देगा, फर्स्ट ही विल इशू द नोटिस टू द द अदर साइड, ओके। अगर आप तुम देखोगे, सो बेसिकली 134 टॉक्स अबाउट सर्विस, basically he will issue the summon or maybe the warrant, okay, and he will ask him that what I have received a complaint and what you have to do, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो पावर देता है, बट इट्स रेगुलेटेड वन ऑल्सो। सो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, अगर सो मोटो नहीं ले रहा तो यू कैन मेक अ कंप्लेन, कैन ऑलवेज मेक अ ओके सर। कंप्लेन कि इसके कारण मेरे को न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूसेंस की डिफिनेशन आप जरूर देख लें, इंडियन पिनल कोड में यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बारात, बहुत बार देखा ना शादियों में, लोगों ने सड़क पे इंक्रोच कर लिया और आपको आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, यू नो, दैट वे, देन आल्सो यू कैन अप्रोच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। या आपने समझ लीजिए किसी के घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसने सारा मलबा जो है सड़क पे डाल दिया और आपको आने जाने की परेशानी हो रही है, सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू द कोर्ट। सो इट्स वेरी इट्स कवरेज इज humongous. I mean, in terms, every nuisance is covered under 133 until unless there are specific provisions. In fact, एक केस में मैं पढ़ रहा था जहाँ पे कोई मशीन लग गई थी उस इलाके में और उसके कारण साउंड पोल्यूशन बढ़ गया था, ठीक है। एंड मशीन हैड ऑल द लाइसेंसेस एज वेल, आई मीन द पर्सन हु वाज रनिंग दैट मशीनरी, but still the SDM has issued an order for removal of that machine from that area. So ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। Excuse me, sir, I have a question. हाँ, सर, ये रिमूवल ऑफ न्यूसेंस का पावर्स तो पुलिस एक्ट में भी पुलिस को प्रोवाइड किया गया है ना सर? वो तो मैंने तुमको बोला कि CrPC जो पढ़ रहे हो और पुलिस यस एक्ट सर। जो है वो काफी लिंक्ड है, ठीक है, यस सर। सर, तो क्योंकि जरूरी स्पेसिफिक तो नहीं है कि सिर्फ मैजिस्ट्रेट को हम लोग जा करके कंप्लेन कर सकते? पुलिस को बोल सकते हो, पुलिस करती नहीं है जनरली, इसलिए क्योंकि पुलिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे मैंने बोला ना कि
कि अगर वो ऑफेंस बन रहा है तो उनके लिए प्रायोरिटी बहुत होगी। ठीक है, पर सबसे पहले तो कॉग्निजेबल के जो नेचर है उनके लिए उनके मैंडेटरी होता है, वरना उनकी जांच करने के लिए ही उनके पास पावर नहीं होती है। ठीक है, सो जो मजिस्ट्रेरियल जो यहाँ पे जांच होती है वो इंक्वायरी नेचर की होती है rather than इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो until unless a power is given to them, okay, which is quite clear। पुलिस एक्ट में जो बात कर रहे हो 1861 का कौन सा प्रोविजन की बात कर रहे हो, विच सर प्रोविजन में कर दिया 23 गया? में भी दिया हुआ है और 34 में भी दिया गया है सर। 23 में क्या दिया हुआ बताओ, रीड करूं? एक मिनट सर। सर ड्यूटीज टू पुलिस ऑफिसर है 23 पे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर प्रॉम्प्टली टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स लॉफुली इशूड टू हिम बाय एनी competent authority to collect and communicate intelligence affecting the public peace to prevent the commission of। फिर अब तुम समझ गए, तुम्हारी अपनी लाइन से पढ़ते समझ में नहीं आया आंसर? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। और तो टू क्या समझ में टू आया? डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंसेस टू जस्टिस एंड to apprehend all persons whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient ground exists। और ये था सर 34 पे था। मैं शरण जी, मैंने क्या सर बोला? आपने एक लाइन पढ़ी, आपको समझ में क्या आया? आप कंपिटेंट अथॉरिटी का बात किया गया है सर। हाँ, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? सर मजिस्ट्रेट्स एंड। तो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मजिस्ट्रेट होता है वो यस ऑर्डर देगा, एग्जीक्यूट थोड़ी करने जाता है। एग्जीक्यूट कौन करता है? सर मेरा एग्जीक्यूट। पॉइंट समझ में? यस एग्जीक्यूट कौन करता है बताओ? सर मजिस्ट्रेट सर ऑर्डर्स देगा तो फिर एग्जीक्यूट पुलिस करेगा ना। पुलिस सो मोटो तो नहीं कर सकता ना, अगर अच्छा। कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, यस कॉग्निजेबल सर। ऑफेंस नहीं है तो कैसे करेगा ये बताओ मुझे। मेरा पॉइंट समझो मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वी कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है, सर तो सेक्शन 34 पे क्या है सर? सर एनी पर्सन हु 34 का on any road or in street or thoroughfare within the limits of any town पहले एक to एक which सेक्शन पे आ this। जाते हैं। पहले तुम्हारा सेक्शन तुमने बताया सेक्शन 34 21, सर। तो 23 सबसे सर। पहले क्या होता है? 23, एक मिनट। Duties of police officer. It shall be duty of every police officer promptly to obey and execute all the orders and warrant lawfully issued to him by any competent authority। ठीक है, ये समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, यस सर। कि भाई ये खुद यहाँ नहीं बात कर रहा है, इन्हें कह रहा है कि जो एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर, जैसे ऑर्डर मान लो कि पुलिस को ऑर्डर दे दिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कि तुम जाके ये स्ट्रक्चर जो है इसको डिमोलिश कर दो। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गई। पहले बात तो ये, अच्छा अगर पूरा रीड करोगे ना, तो कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग द पब्लिक पीस प्रिवेंट कमीशन, तो प्रिवेंटिव वाले हैं तो चैप्टर 11 में है, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, चैप्टर 11 ध्यान से पढ़ोगे सीआरपीसी में तो सारी चीजें कवर है। फिर आओ, तुम्हारा कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हो पुलिस एक्ट में? 34 सर। 34, एक सेकेंड। 34, 34 प्रेजेंटेशन में है 34? यस सर। कौन से? 33 देखा मैंने। 30, हाँ हाँ बताओ 34 का क्या रीड करो? सर एनी पर्सन who on any road or in any open place or street or thoroughfare within the limits of any town to which this section shall apply shall be specifically extended by the state government commits any of the following offences to the obstruction, inconvenience, annoyance, risk, danger, or damage of the residents or passengers shall, on conviction before the magistrate, be liable to a fine क्या है? not समझ में exceeding आया? 50 rupees। Yes sir। अब समझ में आ गया ना? Yes sir। क्या समझे? सर सुओ मोटो नहीं है सर।
सो मोटो जो है, सो मोटो अगर समझना है तो सिर्फ तुम्हारा चैप्टर 11 है, मैंने शुरुआत में तुम लोगों को बताया ना। सो मोटो Yes, जो है सिर्फ चैप्टर 11 है। सो मोटो एक्शन देखो, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ही समझ लो, दिमाग में होना चाहिए। जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होने का चांस है, ठीक है, तो वहां पे सो मोटो पुलिस एक्ट कर सकती है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे क्राइम है जिसके लिए स्पेशल एक्ट है, ठीक है, चाहे वो एनडीपीएस हो या कोई और भी हो, वो तो भी कॉग्निजेबल ही है एक तरीके से देखा जाए मोटा मोटी। और अदर स्पेशल एक्ट है तो वहां पे भी वो रहते हैं, बट इन सब चीजों में सुमोटो एक्शन के लिए नहीं है। इट हैज टू बी गाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट, बी इट जुडिशियल और द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, yes, sir. समझ में आया मैं क्या बोल Yes, रहा sir. हूँ? तो 133 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आसपास तुम लोग देख सकते हो। You can also advise to your resident welfare association or the societies, you know, in case of nuisance, where to approach and how to approach. Okay. Then 134, 135 and 136 more or less बात करता है कि सर्विस कैसे देंगे, प्रोसीजरल चीजें हैं। और जिसमें ये बात करता है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं और चीजें नहीं होती हैं तो लाइबिलिटी क्या है। सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। So that's all for today. I'll request all of you to go through these chapters. मैंने बोला है we'll come back and for next 1 week we'll discuss preventive provisions in the CRPC. So we'll divide the CRPC in different parts and we'll keep on discussing all these things. And I request all of you please go through it and then maybe next time we can have a discussion. आज तो 2 ही 3 लोगों ने बोला, शरण ने, मिश्रा का हुआ और संजना का। इसके अलावा आप लोग भी नेक्स्ट टाइम थोड़ा पढ़ के आओ, और कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, पहले भी पूछ सकते हो, बाद में भी हो सकता है। आई विल ट्राई टू आंसर इट एंड इन केस आई एम अनेबल टू आंसर विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू दोस क्वेश्चंस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज ये हमारी क्या बोलते हैं, डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर आप बोलते हैं कि आई एम doing law or I am a budding lawyer, so people may ask you on this advice. Dangerous construction अगर आप देखा, दिल्ली शहर में तो काफी देखा है ना, न्यूज में भी आता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, चीजें हैं, तो वो सब चीजें ये प्रोविजन सीआरपीसी का कवर करता है। किसी का कोई कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, अभी वी कैन डिस्कस आल्सो, आई एम ओपन फॉर अ डिस्कशन, or anyone wants to make a comment or want to add something. Ayush, can you present your the findings of the case, especially the case that you have shared with me? अभी करना चाहोगे कि मंडे को करोगे? आयुष, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है क्या आवाज? रेजोल्यूशन तुमको आवाज आ रही है? यस सर। आयुष की आ रही है आवाज? आयुष की? सर नो सर। बट सर हिज माइक इज ऑन सर। आयुष, यू आर नॉट ऑडिबल। मुझे लगा कि मेरा प्रकाश, एक मिनट देखो आयुष का क्या होगा। सर आपने सर वो अरेस्ट मेमो वाला सर एक वो टास्क दिया था टू फाइंड आउट द हाँ, रेस मोमो का लास्ट टाइम डिस्कस तो किया था हम लोगों ने, रेस मोमो में क्या गलती हो गई थी। यस सर। उसमें उन्होंने ही, ये आयुष की भी नहीं आवाज आ रही है, बलराज की भी हमको नहीं लग रहा है आवाज आ रही है। मेरे ख्याल से इट्स मोर ऑफ अ बैंडविड्थ आल्सो। ठीक है, विल मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट सर विद वो आयुष। ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है सर थोड़ा सा आयुष के सिस्टम में, लाइक वो ज्वाइन हाँ। ऑडियो कर नहीं पा रही है आप, बट आपकी आवाज उसको आ रही है, लेकिन लाइक वो कुछ भी बोल रहा है तो वो ऑडियो जो है हम में से किसी को सुनाई हाँ, नहीं दे रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सो ही कैन प्रेजेंट ऑन मंडे। ओके ओके। So Monday we will have two important presentation.
One is, I think, from Aboli. Second presentation will be from Ayush side. I've shared with him, there are two important case laws. Okay, one is related to maintenance under section 125 of CrPC, which is also very important, because क्या होता है कि अगर देखोगे लॉ में भी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी, there are a lot of cases related to divorce. Okay, and then maintenance is one of the major issue or the bone of contention in a divorce case. So maintenance कैसे calculate किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक judgment आया है, and it's a leading case. That's very important. And I'll request Ayush, you can share your presentation within the group, the ANBAY Legal WhatsApp group. Second, he is going to also present a case on abduction. Abduction बहुत बड़ा issue है, और it becomes very difficult for a defense lawyer to protect any of his client if there are allegations against him for abducting any minor. So there is one important case now which gives certain hints or the guidance. If we can use that in our favor, and if we can create certain situation, then you can get your client free from the prosecution side. So those things are very important, and I request all of you to go through the presentation also. अभी आपके पास छुट्टी है, ऐसा ज़्यादा काम नहीं, वैसे भी 4 बजे के बाद में आज छुट्टी होगी, और संडे को थोड़ा सा just go through the presentation, and also go through the presentation of Agoli and also the Ayush, and also go through at least chapter 10. So maybe Monday or Tuesday we'll discuss chapter 10 of CrPC, and if we have a time, then we'll also move to the chapter 8, which is also very important. Okay, so that's all. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, bye, take care everyone. Bye. Bye, sir.